Hello, my dear student. Welcome in biology classes. Biology with Prasant. Today I am going to start one most important topic for the competition level as well as for the board appearing student. That is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. Here you can see cell cycle and cell division. What is cell cycle? Before that, you already know from the lower classes what is cell. A standard definition of cell is the basic structural and functional unit of life. जैसा कि आप जानते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. So we know that the if cell is the basic structural and functional unit of life, so cell is the basic unit of life. From the lower classes, you know, cell combinedly form tissue, tissue form organ, organ form organ system, and organ system are coordinated to each other that form body. Similar cell form tissue. If similar cell combine into each other, that form tissue, and tissue form organ, and so on. So this is the basic things. But our topic is today cell cycle and cell division. So one important knowledge about that for this topic, you can see minimum 8, maximum 15 questions in the एग्जामिनेशन. आप अपने एग्जाम में के दौरान पाएंगे कि सेल साइकिल सेल डिवीजन से नियर अबाउट 8 क्वेश्चन, अदरवाइज 15 क्वेश्चन आप पाएंगे अपने एग्जाम में. इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए. इसको ध्यानपूर्वक देखें. So simply we can identify what is cell cycle by the name cell cycle. Cycle means the event that is takes place cyclic mode, means if we start from a particular point and come to at point on the completing of their circular path. तो सेल साइकिल ये हुआ. उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे आपकी सेल डिवीजन क्या होता है. सेल डिवीजन, as you know that all the body is made up from a cell. कोई भी बॉडी होगी, कोई बना होगा कहाँ से, उस सेल से बना होता है. और ये जो हमारा इतना बड़ा शरीर बन गया है, that body is made from the different types of the cell and their constitution to each other. कैसे बना है कि जो हमारी लाइफ है वो एक छोटे से सेल से शुरू हुई. आज हम लोग एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में खड़े हुए. और ये जानना जरूरी है कि व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ सेल डिवीजन इन आवर बॉडी सिस्टम. सेल डिवीजन is next. This is clear. Cyclic event that is takes place in the a particular organism for their developing and for their uh, initiating all the stages, including their growth, repair, and others. And what is the important of this cell division? Cell division is important for the cell differentiation, growth, development of a particular organism. So simply we can say cell cycle, cell division is the most important event that is takes place in our life. By that our body going to be appear a well defined as well as the well differentiated. All the organs of our body is well differentiated with the process of cell division. अब जानेंगे क्यों ये जरूरी है. सेल डिवीजन या सेल साइकिल हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है. इसके लिए जानना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल साइकिल, सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन इज 3 टाइप्स. दैट इज फर्स्ट वन इज द mitosis. Second one is the mitosis,
mitosis, and third one is the meiosis. Amitosis, mitosis, and meiosis. Amitotic, mitotic, or meiotic. This is These are the three different types of the cell division that is takes place usually from the unicellular organism to the multicellular organism. ये तीनों जो साइक्लिक इवेंट है सेल डिवीजन के, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, जो कि एक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसी भी सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन और उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस पार्टिकुलर सेल में डिवीजन है। तो इसके लिए 3 इवेंट है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आइए जानते हैं कि हु डिस्कवर्ड एमाइटोसिस, हु डिस्कवर्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। कई बार ऐसे प्रश्न आया है आपके कंपटीशन में, नीट में, मेडिकल में और अदर्स कंपटीशन में भी कि हु डिस्कवर्ड एमाइटोसिस, हु डिस्कवर्ड माइटोसिस एंड हु डिस्कवर्ड मियोसिस। लेट्स सी। Amitosis for the first time used by Remak। रीमैक वन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है दुनिया में, रीमैक, उन्होंने बताया एमाइटोसिस। सेकंड, माइटोसिस की डिस्कवरी वाल्टर फ्लेमिंग। दूसरी मियोसिस, मियोसिस को बताने वाले फार्मर एंड मूरे। 3 साइंटिस्ट, तीनों जो हमारा सेल डिवीजन इसको बताया, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस को। एमाइटोसिस को बताया रेनायक ने, माइटोसिस को बताया वाल्टर फ्लेमिंग ने और मियोसिस को बताया फार्मर मूरे। 100% इन तीनों में से कोई ना क्वेश्चन आपको मिलेगा। अल्टरनेटिवली नीट 2013 के फर्स्ट पेपर में आया था कि हु डिस्कवर्ड मियोसिस। ये वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, जनरल है, लेकिन सम टाइम दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। छोटी बातों को हम लोग डिनाई कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इसमें तीनों में होता क्या है, ये ज्यादा जानना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एमाइटोसिस, एमाइटोसिस हियर mitosis here division of cell takes place. One cell is divided into 2 cells, but one thing here, if one cell is divided into 2 cells with the same chromosome number, and further this 2 cell is divided into 2 more cells with the same chromosome number, with their unequal division. Unequal division means the structure of this cell is maybe unequal. Generally, sometimes scientists cannot differentiate between the amitosis and mitosis, but you can see there is general differentiation. Generally, it is found in the amoeba. If the amoeba body is divided into more than cell, 2 cell, 4 cell, and others, what will happen? There is unequal division of cell takes place. Means chromosome number is same, but division means size of that particular cell may be different, means size may be varying. So here one cell divided into 2 cells, further divided into 4 cells, so with the same chromosome number. So here mitosis, next one is the mitosis. Mitosis same process, but mitosis discovered by Walter Fleming. This is the most important, in which also one cell divided into first 2 cells with the same chromosome number. Further, it is divided into 2 more cells. Means this one cell also divided with the 2 more cells. Here you can see morphologically the first cell divided into 2 cells, otherwise 4 cells, is equal with the same chromosome number. So simply we can say amitosis and mitosis is used to similar, लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ही हम लोग थोड़ा बहुत इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि एमाइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है, जैसे अमीबा के केस में
उसकी जो साइज वेरिएबल होती है मॉर्फोलॉजिकल, उसमें जो चेंजिंग होगा तो इसमें छोटे बड़े साइज में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइटोसिस में यूजुअली ये टेक्स प्लेस होता है अमीबा या पैरामीशियम, दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में। यहाँ पे वन सेल डिवाइड होता है टू सेल में, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर है ये उस डिवाइड होने के बाद वो क्या होता है, नियर अबाउट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। बट हियर सेम ए माइटोसिस और माइटोसिस में सेम क्या है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल इज सेम, रिमेन सेम। अगर कोई पेरेंट सेल है उसमें उसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n है, 2 इंटू n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई। जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, 23 इंटू 2 इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल है। उसी तरह यहाँ पर ए माइटोसिस और माइटोसिस का क्या है कि जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरियल सेल, इन सब में क्या होता है, ए माइटोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट टू द डॉटर इज द सेम, आइदर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल, 4 सेल, अदरवाइज सो ऑन। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ए माइटोसिस एंड माइटोसिस। वंस मोर, ए माइटोसिस, माइटोसिस, A mitosis is discovered by Remer and mitosis discovered by Walter-Flemming. After A mitosis and mitosis, another third one is the meiosis. Here you can find that what is the basic difference between the mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis, one difference you found, my dear student, that is A mitosis or mitosis usually takes place in the unicellular organism, unicellular organism, either for example in amoeba, paramecium, euglena or bacterial cell. Here meiosis mostly takes place in multicellular organism, mostly takes place in the multicellular organism. In the case of meiosis, already I discussed, the meiosis term is discovered by Harman and Murray, two scientists. Meiosis generally it is also known as the meiotic division. Meiosis or meiotic. Here I am giving only the general introduction, that is also important for your examination. In the meiosis, what will happen if the parent cell divided into daughter cell or son cell. One cell divided into 4 cells. How? What will happen? In the case of meiosis, it is no distribution of chromosome from the parent to the daughter is found that the parent cell divide. In the case of meiosis, half chromosome number distributed to the daughter cell. Half chromosome number, how can you say? 2n plus 2. So 2n divided by 2 divide is equal to 1. So we can say here from the parent to the daughter half chromosome. इसमें क्या होता है, तो पेरेंट सेल है, इसमें टोटल 2n क्रोमोसोम नंबर है, डिवाइड होकर के हाफ क्रोमोसोम नंबर अर्थात n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में हो जाता है. फर्दर इट डिवाइडेड इनटू जस्ट लाइक ए माइटोसिस, 2 more cell, simply 2 into the 4 cell form with the same chromosome number from this first division. So simply we can say in the case of meiosis, this is the meiosis first, this is the meiosis second. Meiosis first and meiosis second. So on the basis of their distribution of chromosome, distribution of their cell, how can we can say this meiosis is known as, because here 2n is divided into half n, so here you can say reduce process is going on, that's why it is known as reductional division, reductional division
otherwise reduction division. Sometime some publisher also said about that this is the known as half division, because here distribution of chromosome from the parent to the daughter is the just half from the parent to daughter. But in the case of mitosis, the mitosis you already know, I already discussed, there is the equal distribution of the chromosome from parent to the daughter takes place. So here one slight difference between the amitosis and mitosis is there. Amitosis and mitosis, there is a equal division of chromosome, means equal distribution of chromosome from the parent to the daughter takes place. That's why it is known as equational division or equal division. In the case of meiosis, here distribution of chromosome from parent to the daughter takes place with the half number of chromosome is distributed. That's why it is known as reductional division. So this is all about the amitosis, mitosis and meiosis. Now I am going to start about the how cell cycle event takes place. Let's see. This cell cycle event takes place by the two process. First one is the interphase, and second one is known as the mitosis phase. Interphase and mitosis phase, and it is also short form, it is known as M phase. Interphase or mitosis phase. Interphase, how it is here, you can see a cyclic event takes place in which the event takes place here G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase, S phase and G2 phase. After that, starting up, sometime here may mention G0 phase also. G1 phase, S phase, G2 phase. After that, starting of the M phase. M phase start with a point that is known as karyokinesis. And it start with the four phases that is known as prophase, metaphase, anaphase and telophase. G1 phase, S phase, G2 phase. After that, prophase, metaphase, anaphase, telophase. From the G1 to the G2 phase, it is known as interphase. And from the prophase to the telophase, it is known as M phase. ये हमारा साइक्लिक इवेंट है जो कि इंटरफेज और यम फेज से टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि स्टार्ट होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद यम फेज आता है जहां पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको याद करने के लिए काफी ट्रिक भी है जिसको हम बारी आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। आफ्टर दैट वी कैन से सिंपली इट इज P मैड फेज, P M A T, this one M phase, prophase, metaphase, anaphase and telophase. And this interphase you can say G1 phase, S phase and G2 phase. This cyclic event takes place in the interphase and M phase. So in the G1 phase, this is also known as the gap 1 phase. Gap 1 phase, growth phase first. Otherwise, post mitosis phase also we can say. This is the synthesis, yes, for synthesis phase. This
G2 phase is known as the gate 2 phase. Here one term is given karyokinesis. Karyokinesis, and after the ending of this M phase, one phase also start, that is known as cytokinesis. आइए हम लोग जानते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या है। नाम से इसके क्लियर, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहां पे देखेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस lysis. So simply we can say division of nucleus is known as कैरियोकाइनेसिस। हम लोग आसानी से जान सकते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या है। कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस lysis or breakdown. So simply we can say division of nucleus is known as karyokinesis. Here cytokinesis, cyto means cell, kinesis means lysis. Just opposite of the karyokinesis. Cyto means cell, division of cell means whole body is divided. So how we can say karyokinesis followed by this M phase, at last by the cytokinesis. After the cytokinesis, division of cell, formation of two cell, core cell takes place. So here this amitosis, either mitosis or meiosis, followed by interphase as well as by M phase. This is all about the introduction about prophase, metaphase, anaphase, telophase, that is the second part M phase, along with the interphase, that is start from the G1 phase, S phase and G2 phase.